Good afternoon, class. आवाज आ रही है? ठीक। तो हम लोग थ्योरी में थे, राइट? नेटवर्किंग कैपिटल। गुड। नेटवर्किंग कैपिटल में अपनी लास्ट लाइन क्या लिखा था? क्या लिखा था लास्ट में? क्या लिखा था लास्ट लाइन? करंट एसेट्स। अच्छा, ठीक है। This concept is useful for calculating the amount of current asset available to meet current liabilities. Full stop. Perfect. उसके आगे लिखिएगा. It indicates. It indicates. It indicates the liquidity of the concern. Sorry. It indicates the liquidity of the concern in the immediate future. In the immediate future. It indicates the liquidity of the concern in the immediate future. Full stop. Continuation. Therefore, ratio analysis takes into therefore ratio analysis takes into consideration net working capital only. Therefore, ratio analysis takes into consideration net working capital only. हो गया सबका? यहाँ तक लिख के? Yes, perfect. Next, third one आपने लिखा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट working capital in which, write down, a concern must always have a concern, concern, concern must always have a minimum amount of working capital, minimum amount of working capital, minimum amount of working capital at its disposal, at its disposal to be able to meet disposal
to be able to meet current liabilities, to be able to meet current liabilities as and when they arise. Current liabilities as and when they arise. As and when they arise. Full stop, continuation. In other words, a concern, in other words, in other words, a concern must have, a concern must have minimum amount of, in other words, a concern must have minimum amount of minimum amount of fund minimum amount of fund to ensure liquidity, to ensure liquidity and solvency, to ensure liquidity and solvency. परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर लिखा अ कंसर्न मस्ट ऑलवेज हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल at its disposal to be able to meet current liabilities as and when they arise. In other words, a concern must have a minimum amount of funds to ensure liquidity and solvency. सबने लिखा इतना? किसी का रहा हुआ है? Yes. Next, write down temporary or fluctuating working capital. Fourth, temporary or fluctuating. Temporary or fluctuating working capital. In which, write it down. If the concern wants to increase, if the concern wants to increase its level of activity, if the concern wants to increase its level of activity, if the concern wants to increase its level of activity and produce level of activity and produce and sell more goods, increase its level of activity and produce and sell more goods, comma, naturally it will need additional amount of working capital. Naturally it will need additional amount of working capital. Naturally it will need additional amount of working capital. Full stop, continuation. If the increase in the level of activity, if the increase in the level of activity, if the increase in the level of activity is temporary or seasonal, if the increase in the level of activity is temporary or seasonal, the additional amount of capital,
varies additional amount of working capital varies with the level of activity with the level of activity. Temporary or fluctuating working capital. If the concern wants to increase its level of activity and produce and sell more goods, comma, naturally it will need additional amount of working capital. If the increase in the level of activity is temporary or seasonal, the additional amount of working capital required is called temporary working capital. The amount of temporary working capital varies with the level of activity. इतना सबने लिख लिया? Yes. ठीक. ठीक. Next, write it down. Balance sheet working capital. Fifth one. Balance sheet working capital. In which you have to write usually working capital is determined on the basis of balances of current assets and current liabilities. Usually working capital is determined on the basis of balances of current assets and current liabilities as per the closing balance sheet of concern. As per the closing balance sheet of concern. As per the closing balance sheet of a concern. Full stop, continuation. Such working capital computed on the basis of the book values of current assets and current liabilities is called as balance sheet working capital. Such working capital computed on the basis of the book value of current assets and current liabilities is called balance sheet working capital. Usually, working capital is determined on the basis of the balances of current assets and current liabilities as per the closing balance sheet of a concern. Such working capital computed on the basis of
Such working capital is computed on the basis of the book values of a current assets and current liabilities. Is called balance sheet working capital. सबने लिखा इतना? ठीक ठीक नेक्स्ट लिखिए कैश वर्किंग कैपिटल. कैश वर्किंग कैपिटल. The net current asset indicate the net current assets indicate the net current assets indicate the amount of funds available to the net current asset indicate the amount of funds available to a concern if and only if and only all the current assets are realized at book value. However, full stop continuation. However, in reality, the actual cash realized from all current assets appearing in balance sheet may be less than the book value. Full stop continuation. The cash working capital indicates the working capital at cash cost. The cash working capital indicates the working capital at cash cost that is debtors at cost and stock at actual cash cost. Debtors at cost and stock at actual cash cost. Debtors at cost and stock at actual cash cost. It eliminates
It eliminates the profit element. It eliminates the profit element. It eliminates the profit element. कैश के अंदर आपने लिखा the net current asset indicate the amount of funds available to a concern if and only all the current assets are realized at book value. However, in reality, the actual cash realized from all current assets appearing in balance sheet may be less than the book value. The cash working capital indicates the working capital at cash cost, that is, debtor at cost, stock at actual cash cost. It eliminates the profit element. सबने लिख लिया इतना? ठीक है. Second last, positive working capital. Positive working capital. When current asset exceed, when current asset exceed when current asset exceed current liabilities, when current assets exceed current liabilities, the net current asset is a positive figure. When current asset exceed when current asset exceed current liabilities, the net current asset is a positive figure, and hence it is called positive working capital. When current asset exceed current liabilities, the net current asset is a positive figure. Hence, it is called positive working capital. Full stop, continuation. Positive working capital indicates favorable liquidity and solvency position of a concern. Positive working capital indicates favorable liquidity and solvency position of a concern. Favorable liquidity and solvency position of a concern. हो गया ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल लिखकर.
ठीक. Last, negative. Okay, negative working capital. When current assets are when current assets are when current assets are less than current liabilities. When current assets are less than current liabilities, the net current asset is negative. When current assets are less than current liabilities, the net current asset is negative figure. The net current asset is negative figure, and hence it is called negative working capital. Hence it is called negative working capital. Negative working capital indicates negative working capital indicates lack of liquidity. Negative working capital indicates lack of liquidity and adverse solvency position of a concern. Lack of liquidity and adverse solvency position of a concern. Lack of liquidity and adverse solvency position of a concern. When current assets are less than current liabilities, the net current asset is negative figure. Hence, it is called negative working capital. Negative working capital indicates lack of liquidity and adverse solvency position of a concern. लिखा आपने?
लिख लिया, ठीक। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये हमने वो कन्वर्जन में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे थे तब भी हमने देखा था, राइट ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा वर्किंग कैपिटल मतलब जो कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा लगता है, सॉरी, वो पैसे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं कि कंपनी किस तरीके से अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करती है। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन देखते हैं, जैसे कि कंपनी ने लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर, जो भी जैसा कंपनी का एस्टिमेशन होगा कि उन्होंने 1 लाख रुपया लगता था पूरे महीने में या साल भर में, तो इस बार आपको कितना लग सकता, इस बार कितना लग सकता है, तो आपको एस्टिमेशन करके देना बहुत सिंपल है एक्चुअली ये वाला चैप्टर भी। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब यही है कि मुझे कितना पैसा लगेगा मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। तो उसमें से कुछ टाइप्स दिया है, ये आपको थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, अदरवाइज तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है ग्रॉस मतलब, क्या होता है, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में दिखेंगे आपको। ग्रॉस मतलब आपका करंट असेट्स, करंट असेट्स जिसमें करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, करंट असेट, उसको दूसरा नाम है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर नेट वर्किंग कैपिटल, जो आप लोग अभी से हमने किया है ऑलरेडी, करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। फिर थर्ड वाला है आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये वर्किंग कैपिटल है जो आपको हमेशा लगेगा ही। जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट मंथ में मुझे 1 लाख रुपीज लगा था वर्किंग कैपिटल में, तो इस महीने में भी मुझे 1 लाख रुपीज परमानेंटली लगेगा टू रन द बिजनेस, राइट। अब ये परमानेंट हो गया। तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है, जैसे कि मेरा कोई सीजनल बिजनेस हो, स्वीट्स का बिजनेस है मेरा समझो, तो स्वीट्स के बिजनेस में बाकी टाइम पे तो ठीक ठाक बिजनेस होता है, पर स्पेशली दिवाली का ओकेशन हो गया, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, या ईद हो गया समझो, तो ये टाइम पे तो स्वीट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो टाइम पे मेरे वर्किंग कैपिटल में मुझे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। नॉर्मल सीजन के कंपैरिजन में दिवाली के सीजन में मेरा सेल ज्यादा होता है, ज्यादा सेल होता है, इसका मतलब मुझे वो महीने में वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। परमानेंट 1 लाख रुपीज तो लग ही रहा है, परमानेंट 1 लाख के साथ मुझे और एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगा, उसी को बोलते हैं टेम्पररी। सीजनल जो मेरे सीजन पे डिपेंड करेगा, राइट, फ्लक्चुएटिंग है, वो हमेशा मुझे नहीं चाहिए। दिवाली, क्रिसमस, ईद, वो टाइम पे मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। वैसा वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट योर, जो आप क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, वही जो क्लोजिंग आपका असेट एंड क्लोजिंग आपका करंट लायबिलिटीज जो होता है, क्लोजिंग करंट असेट और क्लोजिंग करंट लायबिलिटीज, उसी को मिलके जो बोलते हैं लास्ट डे का, वो है आपका बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल। लास्ट डे वाला, हाँ, लास्ट डे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करते हो वो। फिर कैश वर्किंग कैपिटल, जो हमें एक्चुअल में इसको फॉलो नहीं करते, कैश वर्किंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट को नहीं इंक्लूड करके सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के एलिमेंट को डालते हैं, जैसे कि डेटर्स। आप ये चीजें आगे देखोगे, हम डेटर्स को कॉस्ट में भी वैल्यू करते हैं और सेल्स में भी वैल्यू करते हैं। ये चीज में आपको सम्स करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट को निकालना, प्रॉफिट के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट के पार्ट को डालना, उसको बोलते हैं कैश वर्किंग कैपिटल, राइट। लास्ट क्या है? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग। पॉजिटिव मतलब क्या? जब आपका वर्किंग कैपिटल करंट असेट से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। दैट इंडिकेट्स व्हाट? करंट असेट आपका ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से, राइट।
नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जहां पे आपका करंट लाइबिलिटी ज्यादा है और करंट असेट कम है, तो आपको आंसर नेगेटिव में आता है। ये तो हमने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है, दो तीन सम किया था हमने जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल मेरा नेगेटिव आ रहा था। उसमें नेगेटिव था मतलब आपका लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है। पॉजिटिव मतलब मेरा करंट असेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से। तो जब पॉजिटिव होता है तो मैंने आपको हमने रेशियो में सीखा है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो अच्छा होता है, राइट ना। पॉजिटिव में है मतलब कंपनी का जो लिक्विडिटी है और सॉल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छा है। जब नेगेटिव में आता है तो कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा नहीं है, कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर। समझ आ रही है आपको? 2 मिनट लेके रीड कीजिएगा, कुछ भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है।
ठीक। नोट पैड कहाँ पे है, एक सेकंड। ठीक है। हम साइकिल देखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होता है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैनेज कर लेना। सबसे पहले हेडिंग लिखो कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। हेडिंग लिखो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। उसमें से सर्कल बना के लिखना है। हाँ, यहाँ पे लिखोगे कैश, थोड़ा मैनेज कर लेना। कैश ऐसे एरो बनाओ, ऐसे उसके इधर यहाँ पे लिखो रॉ मटेरियल, हैंड राइटिंग को मत देखो, सिर्फ हैबिट नहीं है ना नोट पैड यूज करने का। एक रॉ मटेरियल लिख लेना, स्पेलिंग MATERIAL, फिर यहाँ पे फिर एरो, फिर यहाँ पे लिखोगे वर्क इन प्रोसेस। वर्क, मेरा तो लिखना भी नहीं, वर्क इन प्रोसेस। फिर यहाँ पे लिखो फिनिश गुड्स। फिर वापस एरो बनाओ, फिर लिखो सेल, फिर वापस एरो बनाओ, लिखो अकाउंट रिसीवेबल। प्लीज हैंड राइटिंग मत देखो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, मैं रिपीट करती हूँ। फिर एरो बना के इधर कैश के पास छोड़। कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सेल, अकाउंट रिसीवेबल।
डन। नीचे दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। उसमें लिखिएगा कैश, इसी तरीके से साइकिल बना के, कैश, एरो, इन्वेंट्री, सेल, अकाउंट रिसीवेबल। लेट मी ड्रॉ, इसको क्लियर करते हैं। कैश, इन्वेंट्री, नीचे सेल, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ पे एड। इनका प्रोसेस छोटा होता है। कैश, इन्वेंट्री, सेल, अकाउंट रिसीवेबल। Next, last one, operating cycle of a service concern. Operating cycle of a service concern. उसमें लिखो सेल, ऊपर कैश की जगह पे यहाँ पे सेल,
सेल अकाउंट रिसीवेबल और यहाँ पे इससे एरो, यहाँ पे कैश, यहाँ पे इसका एरो। सबसे छोटा साइकिल सर्विस का होता है। सेल्स अकाउंट रिसीवेबल कैश। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग साइकिल है, राइट। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि जो एक साइकिल किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहला आपने मैन्युफैक्चरिंग का देखा, राइट। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपका आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम लोग, फिर डब्ल्यूआईपी में प्रोसेस होता है, मतलब उसको प्रोसेस करना। डब्ल्यूआईपी में प्रोसेस होता है बोलते हैं। वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, उसको डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपको पैसा नहीं मिलता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल हमें पता है, और थोड़े दिनों के बाद पैसा मिल जाएगा तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा पूरा ऑपरेटिंग साइकिल है, बराबर ना? समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ये मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। सेम वे में ट्रेडर क्या करता है? गुड्स खरीदता है, उसको बेचेगा, सेल में हो जाएगा। सेल से पैसा नहीं मिला, अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रेडर का ऑपरेटिंग साइकिल है। सर्विस प्रोवाइडर का सबसे छोटा, सर्विस मैंने दिया, वो सेल्स कंसिडर हो जाएगा। पैसा नहीं मिला, अकाउंट रिसीवेबल, पैसा मिल जाएगा तो कैश। क्लियर है आपको? ये इतना सा हमारा थियोरी का पार्ट है। फॉर्मेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना थियोरी हमने आज देखा है, टाइप्स, मीनिंग और टाइप और ऑपरेटिंग साइकिल, इसको रीड कीजिएगा। कुछ भी लगता है आपको तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। सब थियोरी पार्ट है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी अभी लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। इंटरनल्स का आपने पढ़ाई किया, कुछ लग रहा है आपको? किसी को इंटरनल्स के रिलेटेड कुछ पूछना है? पूछना है इंटरनल्स के लिए?
यस क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका वैसे भी लास्ट लेक्चर है ना ये? मैम लेक्चर ऑफ है। हाँ वो ये लास्ट है ना मतलब हमारा। यस मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से दीजिएगा सारा पेपर।